what it requires to build a good T2C sustainable profitable brand. Brand means promises delivered divided by promises made. जैसे Amazon है. So Amazon हमेशा क्या कहता है? Be obsessed with customer satisfaction. The number one thing that has made us successful by far is obsessive, compulsive focus on the customer. I'll tell you Bajaj Almond Hair Oil. It's a classic example. Do not have many SKUs. Build a personal brand. That is the most important thing today. आप आज जितने successful brands को देखो, मतलब डॉली चाय वाला personal brand. Firstly, how good was the chai? It was fantastic. डॉली चाय वाले को चुना, जो चाय वाले तो हैं ही, साथ ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, जिनके हाथ की बनी चाय दुनिया के सबसे रईसों में शुमार बिल गेट्स ने पी, जिसके बाद डॉली रातों रात सेलिब्रिटी बन गए. It's a personal. उसकी चाय में कुछ अलग है क्या? These brands or these companies, they treat you like a king. अगर आपको feeling कोई भी brand या कोई भी product or services दे रहे हैं which will uplift your self-confidence, your ego, the probability of you going back to that brand will be very, very high. Moment marketing has been the new trend. There are many big brands like Nike, Adidas, Red Bull. They are all focusing on moment marketing now and they are capturing the audience through this. पहले मेरे ब्रेन में घुस जाओ, फिर मेरे वॉलेट में आ जाओगे. तब मैं आपको कंज्यूम करना चालू करूंगा. Can you just give me some low budget marketing ideas here? Hi everyone, I am Bharat Gupta, founder of Muscle Mind. It is the world's first active leisure brand and we plan to go global with it. And with me today I have Mr. Sanjay Kathuria, who is a business and finance coach. In this podcast, we will discuss how to be financially independent and how to build a sustainable and a profitable brand for generations to come. So thank you so much, Mr. Sanjay, for being here. And I'm sure that this podcast will be highly insightful. Thank you, Bharatji, for calling me. Thank you. Can you just give me a brief introduction about yourself and your experience in business and finance coaching so far? So basically, I belong to a very middle class family. We shifted to Bombay in 1991. Prior to that, we were in Baroda and Assam. So when we came to Bombay, तो फिर वो पता चला big city क्या होती है. तब तक हम छोटे शहरों में रहते थे. And from there, I did my complete education. I did my engineering and then I did my MBA in finance. And I got into a job with a company called Raheja Universal, which is a real estate company based out of Bombay. और उनके साथ मैंने काम किया. So I was working directly with the managing director there, Ashish Raheja, which gave me a very good exposure कि किस तरीके से businesses में काम होता है, कैसे ओनर डिसीजन कैसे लेता है, डेटा को कैसे पढ़ते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है. तो बहुत सारी चीज़ें जो बिजनेस के नुआंसेस होते हैं वो काफ़ी अर्ली एज पे 23-24 में फर्स्ट जॉब में मुझे सीखने का मौका मिला. एंड देन आई बिकेम द ओनर्स मैन एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज वर्क डायरेक्टली एंड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी. सो बी इट कनकिया, ओमकार, जहाँ पे मैंने काम किया रियल एस्टेट में बॉम्बे में, आई यूज्ड टू डायरेक्टली रिपोर्ट टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, chairman of the company. Then I shifted to Delhi. Delhi again, I was in real estate for a very long time. And then I did a lot of SME consulting, business consulting, small and medium enterprises को consult किया on finance, business, growth, marketing, branding. ये सब चीज़ों पे consult किया. And I'm trying to help them build a business. I'm trying to help them scale a business internationally, globally, domestically. And trying to solve their finance related problems, because आप भी जानते हैं, you yourself being a businessman, कि small businesses को finance का बहुत issue रहता है, छोटे पैसों का बहुत व्यवहार का problem रहता है, working capital का issue होता है, debt management का issue होता है. तो उस पर मैं उनको help कर रहा हूँ, and that's what I've been doing for now almost 5 to 6 years. So Mr. Sanjay, can you just tell me what it takes to build a good brand? I have given a mathematical equation to the word brand. Right. And it is very simple. Brand means promises delivered divided by promises made. As simple as that. Sure. बहुत लोगों की थीसिस है अपने अपने ब्रांड पे. मेरी न्यूमेरिकल थीसिस है. Sure. मैं आपको ये कहता हूँ कि भरत जी, मैं आपके पास 4 बजे आने वाला हूँ. Sure. If I'm here at 3:59, what perception will you have about me? And if I'm here at 4:10, what perception will you have about me? Sure. So my first perception, if you come at 3:59, would be that you value your time as well as my time. And if you come at 4:10, the perception would be that neither you value your time nor my time. And you didn't have the courtesy to even inform me. Exactly. ठीक है? Yeah. तो यही बस फर्क है ब्रांड में. When I promised you 4 p.m, I was here at 3:59. However, if I would have been stuck somewhere, I would have been delayed. I would have made the first phone call and said, I am going to be 15 minutes late. Sure. जैसे Amazon है. So Amazon हमेशा क्या कहता है? Be obsessed with customer satisfaction. तो वो ना ऊपर से ट्रिकल होता है. People know that Jeff Bezos has zero tolerance policy when it comes to customer happiness, customer satisfaction. नहीं customer satisfied है और उसकी problem नहीं resolve हुई, तो वहाँ पे से डंडा पड़ता है सीधा. These kind of things, discipline you have to build a great brand. What I could sense from this conversation,
that the values of the brand, be it customer centricity, be it the honesty, be it care, it all stems down to the brand from the founder or the CEO. If the values of the founder and the CEOs are intact and they are in line with good values, then the probability of a brand failing becomes very very less. Like मेरे इतने founders देखे जिनका intent है that I want to create a 100 crore brand, तो मुझे brand ही बेचना है. हाँ, That is something where the values are not to build a brand. वो प्यार brand से नहीं है, प्यार पैसों से है. पैसों से है कि भाई एक बार आएगा तो बेच के खत्म Yes, करेंगे. they are the people who are having a tough time selling off the brands as well. True, true. So values is the main intact which makes or breaks a brand. Absolutely, हाँ. absolutely. एक तो मतलब brand promise है. There are brands like Louis Vuitton, Dior, Chanel. They will give you an experience of status that would uplift your ego. Even if you talk about Rolex, Rolex gives you that status, that ego, that it is only for the rich. And एक part हो गया emotions. There are brands like McDonald's, Coca-Cola, which sells you happiness. There are brands like Red Bull, which gives you wings to fly, which indirectly it is giving you that energy. So which goes with the product as well. So what I believe ki experience plus emotion of a brand will help a brand or like a product or services to be resonated with the consumers, which will highly be successful for your brand in times to come. See, आपने जितनी बातें करी, हाँ. ये स्टार्ट आपने सही कहा कि फाउंडर से होता है. Sure. If your founder has the perfect vision for the brand, हाँ. if he looks, see, जो बंदा एक्विजिशन के लिए कंपनी बनाएगा, Right. वो ब्रांड नहीं बना पाएगा. Exactly. वो एक खोखा कंपनी बना पाएगा, which could be acquired by somebody, not acquired by somebody is a future decision. Right. But इस किसी को ब्रांड बनाना है ना, हाँ. तो that you have to romance the brand, you have to romance the customers, you have to be in love with the customers. Sure. I was speaking about American Express. हाँ. I have been American Express customer for the last 14 years. ऐसी हालत है कि जब उनके कस्टमर सर्विस से फोन आता है तो मैं मीटिंग छोड़ के बैठ जाता हूँ कि चल इनसे बात करनी जरूरी है. Why? Because their experience of talking to them, the way they talk, the way they solve your problem, the way they are courteous to say no also. कई जगहों पे उनको ना बोलना पड़ता है. But the way they say that no is so beautiful. आप कोई एक बैंक में जाओ, सरकारी बैंक में जाओ, वहां निकल यहाँ से बाद में जाना. They do, and that's why you love those brands. अगर आज मैं इस पॉडकास्ट में उनके नाम ले रहा हूँ, this is because I'm in love with those brands. Sure. And they have made sure that my love sustains for them for very very long time. So like these brands or these companies, they treat you like a king. और it's an human tendency. अगर आपको feeling कोई भी brand या कोई भी product और services दे रहे हैं which will uplift your self confidence, your ego, और अगर आपको king की तरह treat किया जा रहा है, so the probability of you going back to that brand will be very very high. It is actually a very big win-win case हाँ. because it is very expensive to acquire a customer. Sure. But अगर वो advocacy के through और इन सब के through retain कर ले, तो they can get higher long-term value Sure. from that lifetime value of that customer, हाँ. and which can improve their profitability also, and sure. global brand recognition can happen. Sure. So Mr. Sanjay, what it requires to build a good D2C sustainable profitable brand? तो आपने तीन बहुत contradictory word use करे हुए हैं. D2C, sustainable, profitable. Yes. So you know D2C brands, there are many of them. बहुत सारे मतलब D2C brands हैं. But the real question is how many of them are sustainable? How many of them are profitable? Valuations में you can play for few years. After few years, you have to show the profitability. Absolutely, absolutely. See, देखिए D2C में इसकी लाइफ जर्नी है, बट इसका कोई भी D2C कंपनी का अल्टीमेट गोल 1/3 होना चाहिए. हाँ. So any product company should be having 1/3 of its revenue as cost. So let's say if some company is selling its product for 100 rupees, 33 rupees should be the cost of manufacturing of that product. Cost cannot be more than 33. Sure. It is better that it is less than 33, but 33 is the cap. Sure. Now you're left with 67 rupees. The remaining 67 rupees में से 33 rupees should be your cost of operations, which includes your salaries, distribution, then your marketing, everything else. And the last 33 rupees should be your profit before tax. Then you give the government the due tax, and then whatever remains is your profit, final profit. So अगर आप normally भी देखेंगे तो then your PAT should be in the range of a good 20-25%. Which is very good. Which is very very good. I'll tell you, Bajaj Almond Hair Oil is a classic example of this. If you look at Bajaj Almond Hair Oil's strategy, it's 1/3. 1/3 is their COGS, 1/3 is their cost of running the business, including marketing, Right. and 1/3 is their PBT. Then they pay taxes, and whatever is remaining, 20 to 25% is their net profit after tax. It's a very profitable company. It's a sustainable company. It's a market leader in its field, and that's it. So I think अब मैं आता हूँ कि इस पे पहुंचे कैसे. ये तो हो गया ideal world scenario. Sure. That this is what you should aim for. It comes in 5 years, 3 years, 10 years. Sure. First is do not have many SKUs. The moment you start having a lot of SKUs, it's like bringing up a child. एक प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना, उसको वहां पे एस्टैब्लिश करना, कस्टमर के माइंडसेट को शिफ्ट करना, आपका प्रोडक्ट यूज करवाना. आई एम अ कंसल्टेंट विद वन ऑफ द D2C brands where Kishore Biyani ji is also on cap table. So he said a very beautiful statement.
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंटर पीपल्स बाथरूम। Exactly. मतलब ये है कि आज अगर आप फॉर एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं कि आप निविया यूज करते हैं, लेट्स से निविया का बॉडी वॉश यूज करते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शिफ्ट एंड आस्क यू टू शिफ्ट फ्रॉम निविया टू गो टू समथिंग एल्स, बियर्डो चले जाओ या कहां चले, वो आपके ऊपर बहुत बड़ा हैमरिंग होगा जिसपे बहुत कॉस्ट लगेगा, तब जाके आप ट्राई करोगे विद सस्पिशन। सो अगर आप ऐसे 10 प्रोडक्ट ले आए तो आप कितनों पे मेहनत कर पाओगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप सब पे मेहनत कर पाओ। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1, डोंट वर्क ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड मल्टीपल SKUs because there your inventory will kill you, your inventory turnover will kill you, you will have dead stock, and you'll always have this FSN problem, fast moving, slow moving, non moving problem, which is very difficult to handle for brands. So first is less products, less SKUs. So just to sum this up, that inventory management is the key which defines the profitability and the sustainability of the brand. अगर आपकी inventory in control है, so your brand can never go wrong. You will build a profitable brand, your COGS will be less, your profits will be higher. And if your inventory is out of control, number one, आपकी cash flow सारे मतलब stuck हो जाएंगे. So that will affect your cash flow statement, that will affect your profitability. Then you would have to give discounts to sell your product and services, which will directly impact the profitability of the brand. Selling is not selling. Inventory management is selling. It's selling, exactly. अगर आपने इन्वेंट्री सही से मैनेज कर ली तो सेल्स तो मैनेज हो ही हो जाती है वो. एंड मैं इन्वेंट्री के लिए एक स्टेटमेंट कहता हूं कि हमारे जितने व्यापारी हैं, आई हैव कंसल्टेड अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, देयर वाज अ ब्रांड बेस्ड आउट ऑफ साउथ इंडिया व्हिच वाज इनटू एडल्ट डायपर्स, सो आई वेंट टू देम, these guys had 176 SKUs, 176 SKUs. आपके लिए तो इजी होगा गेस करना, बिजनेसमैन है. How many SKUs were contributing to 50% of the sales? 2 or 3. Yes. Perfect. Just 4. Just 4, yeah. Out of 176, 4 of them were contributing to 50% of sales. 16 were contributing to 80% of sales. When I looked at those 16, I said these are the 16 big boys. इन्हीं के साथ खेलना है. 9 out of those 16 had zero inventory. तो मैं इसको प्रॉब्लम को हिंदी में कहता हूं कि जो है वो बिक रहा नहीं है और जो बिक रहा है वो है नहीं. एंड देन दिस गाय इज क्राइंग कि मेरी सेल्स नहीं बढ़ रही, मेरी सेल्स नहीं बढ़ रही. मतलब यार तुम अंडर स्टॉक हो, तुम ऑर्डर कंप्लीशन नहीं कर पा रहे हो, यू आर मतलब आपने ऐड करी, आपने कस्टमर को अपने डोर स्टेप पे बुलाया, उसके बाद कस्टमर ने आपसे माल मांगा तो आप नहीं दे पाए, कस्टमर ने आपको गाली दी, वो बगल वाले की दुकान में गया और सामान ले लिया. तो ऐड करी आपने, पैसे खर्चे आपने, गाली पड़ी आपको और माल कब बिक गया किसी और का. मतलब यार ये कैसे तुम दयावान बन चुके हो कि आप खर्चा करोगे, गाली भी आप खाओगे और फायदा किसी और का करोगे. सो द बिगेस्ट इश्यू वंस अगेन कमिंग बैक टू D2C इज कीप as low as possible SKUs and products. That's point number 1. Point number 2 is build a personal brand. That is the most important thing today. आप आज जितने सक्सेसफुल ब्रांड्स को देखो, मतलब डॉली चाय वाला पर्सनल ब्रांड, इट्स अ पर्सनल, उसकी चाय में कुछ अलग है क्या? कुछ अलग नहीं है. इट्स अ नॉर्मल सिंपल टी. It's that entire packaging of that tea, the entertainment along with that tea, the fact that you see this guy in a lot of gold and glares and he's very energetic and he's serving you tea with this मस्ती कर रहा है और ये सब कर रहा है. And that doesn't happen overnight. It took him 14 years. किसी को नहीं पता, 14 साल से वो टपरी वहां है. वो तो अचानक से एक दिन बिल गेट्स आ गया और वो सब he got famous. He got famous. So second is build your personal brand. Third is digitize. बहुत सारे ब्रांड्स क्या सोचते हैं कि एक वेबसाइट बनाना डिजिटाइज है. नो. How do you manage your inventory? How do you do the billing? How do you send the bills to the customers? All this is a part of digitalization. तो digitalization करो, उससे क्या आपके बहुत सारे hassles अपने आप कंक्लूड हो जाते हैं जो आपको थॉट दे सकते हैं मार्केटिंग खर्चा करने के लिए. फोर्थ इज जनरेट hundreds and thousands of low cost marketing ideas. देखिए इट्स वेरी इजी टू पंप मनी इनटू मार्केटिंग. न्यूज़पेपर वाला आएगा, आपको कहानी देखकर जाएगा, आप उसका फ्रंट पेज पे ऐड करोगे, आपको फायदा नहीं होगा. होर्डिंग 20 होर्डिंग लगा दो, 50 होर्डिंग लगा दो, कोई फायदा नहीं होगा. यू हैव टू बी वेरी टारगेटेड. यू हैव टू सी वेयर योर कंजम्पशन इज. यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्पॉट्स वेयर योर कंज्यूमर इज. वहां पे जाके उसके सर पे बैठो. शॉप इन शॉप करो. बड़े शॉप्स के अंदर छोटी जगह ले लो, आपको ऑलरेडी रेडी ट्रैफिक मिल रहा है, तो वहां से आप अपनी सेल्स को. वाओ मोमो, व्हाट डिड दे डू? यू नो देयर फर्स्ट शॉप was a shop in metro cash and carry, because उन्होंने यार मेट्रो कैश एंड कैरी में तो मेरा कस्टमर आ रहा है, वहां लगा देता हूं दुकान. सबको मोमो खाने का मन करता है, मोमो इज एन ईटेबल, फटाक से खा सकता है आदमी. सो दैट्स हाउ दे स्टार्टेड. तो आपको एक शर्म नहीं करनी चाहिए कि यार आई वांट टू बी आई वांट टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग, ओनली व्हेन आई स्पेंड ऑन मार्केटिंग मैं कुछ कर पाऊंगा. नो, योर पर्सनल ब्रांड एंड गुड लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज कैन मेक द गेम फॉर यू. फिर आपको मार्केटिंग करने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है. Then your marketing becomes the push to all of this. So Mr. Sanjay, can you just give me some low budget marketing ideas here? देखिए फर्स्ट हो गया शॉप इन शॉप, जो मैंने बताया जैसे वाओ मोमो वालों ने किया कि शॉप इन शॉप कर लो. आप बड़े शॉप में जाओ जहां पे बड़ा ट्रैफिक है एंड सेट अप योर शॉप देयर. ठीक है. सेकंड, आप मॉल्स में जाके सैम्पलिंग करो
और सैम्पलिंग में आप है ना ये डेड बॉडी सैम्पलिंग मत करोगे, मतलब आप में कोई एनर्जी नहीं है, कोई कियोस्क अच्छा नहीं बनाया, कोई वाइब्रेशन नहीं लेके आए. डू दोस थिंग्स पीपल, यू हैव टू कैच अटेंशन. बाबा एवरीबॉडी इज हियर. Sure. अपने मॉल में घूम रहा है वो तो ऐसे घूम रहा है, उसकी आंख ऊपर जाए, आप तक जाए, उसके लिए कुछ तो एफर्ट आपको करना पड़ेगा. लेट्स से यू हैव अ डिफरेंट कलर्ड स्टोर और योर कियोस्क इज अ वेरी डिफरेंट कलर्ड कियोस्क. यू नो देयर इज अ टिपिकल टाइप ऑफ यूनिफॉर्म यू आर वेयरिंग which people can recognize. अरे ये तो बहुत loud uniform है, तो दिख रही है, आंखों में दिख रही है. तो आप basically what you have to do is you have to find areas where footfall is already happening. Second ये. Third, use social media. ठीक है, सोशल मीडिया में अगर कोई वायरल हो रहा है तो राइड ऑन देम, क्रिएट रील्स अबाउट देम. जैसे बीच में वो वड़ा पाव वाले हो गए थे, तो आप उसके ऊपर जाके राइड कर सकते हो, उसकी स्टॉल में जा सकते हो, उधर एक वीडियो ले सकते हो. आपको पता है वड़ा पाव वाला लिखोगे तो वाली लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो रील थोड़ी वायरल हो जाएगी, उसमें अपना प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हो. मोमेंट मार्केटिंग करो. जैवलिन थ्रो में ये सिल्वर मेडल जीते, उसके बाद इंडिया में 3-4 और मेडल्स आए, या जो सिचुएशन हुई एक मेडल नहीं मिला हमारे को, तो उस चीज को कैप्चर करो. दीज आर इवेंट्स वेयर पीपल आर hundreds and millions of eyeballs are already there. Just catch that moment. So what I can see that moment marketing has been the new trend. There are many big brands like Nike, Adidas, Red Bull. They are all focusing on moment marketing now and they are capturing the audience through this. तो इसका जो return है वो कैसा है? Is it like nice? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर चीज आपको सिर्फ ROI इसका नहीं देगा कि रिटर्न. देयर इज समथिंग नोन एज ब्रांड रिटेंशन, ब्रांड रिकॉल, टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस लेवल. ये सारे मार्केटिंग के बहुत बड़े बड़े जार्गन्स है, बट दे आर वेरी रेलेवेंट जार्गन्स, मतलब दे आर रिक्वायर्ड जार्गन्स. अब मैं आपको एक बताता हूँ कि ब्रांड्स कैसे प्ले करते हैं. अभी नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो करने जा रहे हैं, सबको पता है या तो ये गोल्ड जीतेंगे या सिल्वर जीतेंगे. हाँ. ठीक है, तो वो पहले से गोल्ड का भी 10 मटेरियल बना के रखते हैं और सिल्वर का भी 10 मटेरियल बना के रखते हैं. पहले से टीम्स रेडी होती हैं सब चीजों में. द मोमेंट ही विंस ईदर ऑफ द टू, दैट कंटेंट स्टार्ट्स गोइंग. सो द फाइट इज कि यू कीप ऑन सीइंग, कीप ऑन, जीत गया, मेडल पहन लिया, चलो डालो, फटाफट डालो, फटाफट डालो. सो ब्रांड्स आर गेटिंग रेडी टू दैट लेवल. अब आप सोचोगे कि ठीक है नीरज चोपड़ा जीतेगा, रात को पेरिस में ओलंपिक्स होगा, मैं सुबह उठूंगा, उसके बाद अखबार में पढ़ूंगा कि नीरज चोपड़ा जीत गया सिल्वर, अब मैं कंटेंट बनाऊंगा, फिर देन यू हैव लॉस्ट द बस. Your content has to hit the moment he wins. And that's where these big brands have played very well. अच्छा, कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी की डेथ पे भी ये ब्रांड्स अच्छे मैसेजेस देते हैं, बट दे कीप देयर लेवल देयर कि भाई हम लोग हैं, जैसे जोमैटो करेगा, ओयो करेगा, ये लोग सब करते हैं. तो वो कैसे करते हैं, उनको पता होता है जैसे somebody is very ill, तो there's a big chance कि he may not survive. जैसे ये हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, जब उनकी डेथ होने वाली थी, एवरीबॉडी वाज सेइंग कि बस अब जाने का समय आ गया, तो ऑल दीस ब्रांड्स हैड रेडी मटेरियल. द मोमेंट ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड दे स्टार्टेड बॉम्बार्डिंग दैट मटेरियल एंड मोमेंट मार्केटिंग हो गई उनके लिए. सो यू हैव टू कैप्चर दीज थिंग्स. अगर आप एक छोटे ब्रांड हो तो एटलीस्ट आप ये सब काम तो कर ही सकते हो. मैंने, यू डोंट नीड अ वेरी बिग आर्मी ऑफ पीपल फॉर दिस. जो पहले ब्रांड्स ने किया है कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉपी कस्टमाइज कर लो अपने हिसाब से, थोड़ी सी स्क्रिप्ट लिख लो. डायलॉग्स लिखने हमारे देश में सबको आते हैं, सबने हिंदी मूवीज देखी हैं. कॉपीराइटर से सब या एक छोटे कॉपीराइटर को हायर कर लो एक छोटी सी फीस पे कि भाई तू हमारे को 20 लाइनें लिख दे, 30 लाइनें लिख दे हमारे ब्रांड के बारे में. जिंगल्स बनाओ. व्हाई आर यू नॉट मेकिंग जिंगल्स? मेरे को पता है एक ब्रांड है, जैसे यहाँ नोएडा में रियल एस्टेट बेचते हैं, दे आर इन्वेस्टर्स क्लिनिक. तो जब मैं मतलब रेडियो सुनता रहता था तो उनकी बहुत ऐड आती थी. उनका जिंगल था, यू कैन कॉल ऑन, उनका फोन नंबर था 8010101010. तो उसको गाने में गा दिया उन्होंने, तो वो जिंगल बन गया. अब लोगों के मुंह पे, अभी सोचो मेरे को इतने सालों बाद भी वो फोन नंबर याद है, क्योंकि वो इतनी बार बजा जिंगल, इतनी बार बजा, एंड इट वाज सो म्यूजिकल, इट स्टेड हियर. यू हैव टू कैप्चर माय ब्रेन शेयर, ओनली देन यू विल बी एबल टू कैप्चर माय वॉलेट शेयर. पहले मेरे ब्रेन में घुस जाओ, फिर मेरे वॉलेट में आ जाओगे, तब मैं आपको कंज्यूम करना चालू करूंगा. तो डू एनी एंड एवरीथिंग पॉसिबल where I can, I can get you here. And that is not necessarily by spending a lot of money on ads, hoardings, ये सब. वो आपको बहुत अच्छा ROI नहीं देते. Right. So Mr. Sanjay, what I can see that your personal PR can take you a long way, because आप जो product services दे रहे हो, आप उनके जो pain areas को capture करना चाह रहे हैं, उनको solve करना चाह रहे हैं. If people, consumers, they see the genuineness of you and your personality, then the probability of them buying your brand and sticking to it would be very high. और इसका जो इनडायरेक्ट एडवांटेज है कि यू वुड सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन योर मार्केटिंग स्पेंड्स, और इसका जो ROI है और इसका जो सक्सेस है विल बी सो हाई दैट इट विल हेल्प यू टू बिल्ड अ सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ब्रांड. देखिए, आपके पॉइंट को कोलैबोरेट करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए एक शार्क टैंक सबसे बड़ा एग्जांपल बना. अमन गुप्ता, एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उनका दिखाया सेल्स का ग्राफ टिल द टाइम ही वाज ऑन शार्क टैंक, एंड देन इट वाज अ 90 डिग्री परपेंडिकुलर राइज.
कि जैसे वो शार्क टैंक पे आया तो कि वो पर्सनल ब्रांड बन गए, लोगों ने उनकी ऑथेंटिसिटी को पसंद किया, वो एकदम सीधा बोलने वाले व्यक्ति हैं, यू कैन से अच्छा यार ये तो अपने टाइप का ही लौंडा है, यू नो, पीपल स्टार्टेड सेइंग दोस थिंग्स. तो his brand also became, you know, that funky brand, relatable brand. Same happened with Ghazal Alag. Mamaearth became a very big brand after she came on screen and, you know, she started investing. Sugar, nobody, मेरे को पता ही नहीं था Sugar करके कोई brand है. भारत पे हो गया, फिर वो चश्मे वाला brand हो गया, Lenskart हो गया, पीयूष बंसल हो गया. Sure. So you could see Piyush Bansal, very good guy, honest, looks very honest, you know, and created a great business. So I think all these people have got benefited from, you know, having a personal brand, and their businesses have become bigger because of their own personal brand. What I've seen ki all these founders, they invest a lot on their personal brand as well, because they know that this will typically is directly proportional to the success of their brand. मैं इसको कहता हूँ कि your personal brand is your CAC killer. CAC मतलब customer acquisition cost. Sure. तो your personal brand is your CAC killer. The moment you have a better personal brand, your CAC becomes very less. And सारा गेम लड़ाई तो वही है ना. GP सबके 80% 85% है. पर जो वो मार्केटिंग बीच में से चूस के लेके चला जाता है, वो मतलब इट्स बेसिकली, वो कहते हैं ना गूगल फेसबुक टैक्स है वो. आपको गूगल फेसबुक को टैक्स देना पड़ता है, because that means they are the biggest largest platforms where you are doing advertisement. Meta, yes. Google Facebook टैक्स ना देना पड़े, इसलिए आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना पड़े. See, I'll give you an example here. There's a Ayurveda brand which is called Shuddhi, and the company is called Jina Siko Life Care. I know the founder very well, Mr. Manish Grover. He's a man, kurta pajama, jacket, अपना जोधपुरी जैकेट जैसे होती है, आप उनको एक ही फॉर्म में देखो, वो भी सफेद कलर का, और आप वो आते थे टीवी पे और रात को वो आयुर्वेदा की चाय, मेडिसिन, ये सब बेचते थे. He's doing it for the last 12 years. And slowly built a brand, खुद का brand presence बनाया टीवी के थ्रू, बिकॉज पहले टीवी बहुत ज्यादा चलता था, देन डिजिटल का वर्ल्ड आया तो उन्होंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आ गए, बट पहले बहुत समय तक टीवी पे ही केप्ट ऑन इन्वेस्टिंग. हाई जीपी बिजनेस, 85-90% जीपीस, तो ही हैड गुड इनफ स्कोप टू इन्वेस्ट ऑन टीवी एड्स. नाउ दिस मैन गॉट हिज कंपनी आउट, उनका आईपीओ आया 2022 अप्रैल में at a valuation of 200 crores. At that time, his profit after tax was 11 crores. And his revenue was, I think, 140, 130, something around those numbers. Today, in 2024, his revenue has touched more than 350 crores and his PAT has touched 67 crores. And his market valuation, as we speak today, is around about 3,500 crores. His net profit earlier was 6 or 7% of revenue. Now it's 22% of revenue. This 15% NP he could have added only because his personal brand became very big. And how did he do that? Just by appearing on TV, doing free webinars, free seminars around health, wellness, food habits, then going to a lot of podcasts, those clips circulating on Instagram, जहाँ भी उनके पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल थे, जहाँ पे उनके पेशेंट्स करेक्ट हुए, अच्छा उन्होंने फील किया, वो सब किया, सिर्फ खर्चा नहीं किया. His marketing cost has remained flat for the last 4 years, and his revenues have tripled, and his profit has gone up by 6 times. Exactly. तो ये क्यों हुआ? बिकॉज उन्होंने सेम मार्केटिंग कॉस्ट में अपने ब्रांड को बना लिया, तो वही मार्केटिंग कॉस्ट जो उनको 1:5 समझो 5 का बेनिफिट देती थी, आज वो 1:15 का बेनिफिट देने लग गई है. तो मार्केटिंग कॉस्ट उतनी रह गई, रेवेन्यू जो है वो 3x हो गया, बिकॉज रेवेन्यू का 90% तो प्रॉफिट में ही फ्लो हो रहा था, तो इसीलिए उनको प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा फायदा हो गया. तो दिस इज अ क्लासिक रेसिपी फॉर अ गुड D2C सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल एंड ग्रोइंग ब्रांड. So, Mr. Sanjay, just to conclude this podcast, some of the key things what I have learned from this podcast, which will be highly beneficial for the youth and other entrepreneurs as well, would be number one, to build a good sustainable brand, always focus on the experiences, emotions, and always look at the after sales and services, because that would lead to advocacy and customer retention, which would directly impact your profitability and the sustainability of your brand. So, thank you so much for being here, and it was a pleasure to have you here.